this recording. Really very, very important topic. Actually, this topic will link lots of topic. In O levels paper, we don't have a question like, oh, okay, this is just a set chapter and we will deal only a set. No, there is a possibility of mixing chapters. They always mix chapters. They always. And coordinate geometry is one of the major link that they mix with. They will link with different chapters. You will see that in coordinate geometry. You will see in trigonometry. You will see in transformation. You will see in coordinate geometry. You will see in symmetries. So you will see in graphing when we are doing a graphing of a function. So coordinate geometry involve major part of our O levels. So very, very carefully you have to understand each and every concept of a coordinate geometry. I already introduced coordinate geometry in a different way. Now I will introduce it a formal introduction of a coordinate geometry, and already discussed about a slope of a straight line. You already know that slope of a straight line. Let me give you another definition of a slope of a straight line in this lecture. So I'm not discussing these kind of things because we already did these things, and we already did gradient rise per unit run. We already did this thing as well. Let me give you another example with this class discussion, and let me give you another definition of a slope, which is very necessary. Uh, you people should know this definition of a slope as well. Okay, Sarmat, can you tell me slope of this line, Sarmat? Sir, 3. Sir, 2, sir, 2. It's 2. Are you sure? Sir, it's 2. It's 2. Are you sure? This would be 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, definitely 2. Now you people know about the slope of a line, like you are making this thing. But now I give you another way to find out the slope of a line, and this is actually a similar way. Uh, this point is at 1 comma 0. Sorry, 0 comma 1, because this is the point on y-axis, and this point is 3 comma 7. Okay, people, can you understand this thing? Hello? 0 comma 1 and Yes. 3 Yes, comma. sir. I Yes, hope. sir. Okay, that's now I'm giving you another definition of a slope of a line, which lead us, which will be helpful to find a slope of a line in very difficult situation. Now, you already you can see this thing as well. This is 3 comma 1, and I already told you slope means rise per unit run. That means if you want a gradient or a slope, gradient slope is a similar thing. So you may say that rise per unit run. Now, this is really interesting. If I find rise, because look, this is a vertical line, I can find rise very easily. Uh, Rise means y-axis simply. He start with first, now he is moved to a 7. That means rise can be find 7 minus 1. Okay, people, can you understand this thing? 7 minus 1. Hello, can you understand this thing? No, sir. Hello, 7 minus 1. Why 7 minus 1? Because this is a vertical line. If I want to find the distance, this one, simply I can minus, because this is simply a vertical line, like this line or this one. It's the same one. Y-axis, you already know about a number line. Na? If you find a distance between distance on a number line, like if this is 5 and this is 2, and you want to find the distance between these two, simply what you do? 5 minus 2, and it would be 5 minus 2. That means 3. So I did a similar thing. If I want to find the distance between this vertical line, actually I want to find this one, and this is 7 and this is 1, so 7 minus 1. Okay, uh,
बच्चों ये बात समझ आ गई? हेलो हेलो. Yes, sir. Okay, now if I want a distance, this line, this horizontal line, simply what I would do, भाई ये और ये बिल्कुल सेम बात है. इसका मतलब ये 3 से 0, तो 3 माइनस 0. आई होप अगर मैं लिखूं 3 माइनस 0 एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके लुक, जैसे मुझे सरमत ने आंसर दिया था 6/3 and answer is 2. That means I have another way to find a slope of a line. For example, look, this is really good one. For example, if this point would be uh, x1 y1 and this point would be x2 y2, then and this point is if I say this is x2, if I call this x2, that means now this point is x2. And if I call this point on y2, that means y1. So this point is y1. If I want a distance between this, as I told you, just I just minus these 2 points. This is actually y2 and this is y1. So if I want this thing, so I would just do y2 minus y1, and this one would be, because I just minus two x values, so it would be x2 minus x1, and this slope can be given by, this is our rise, which is y2 minus y1, and this is our run, which is x2 minus x1. Okay, people, can you understand this thing? Hello, Sarmat, Wajid. Yes, sir. सरमत, वाजिद और Yes. सरमत, आगा. बेटा ये बात समझ आइए? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फाइनली मैंने तुम लोगों को अब स्लॉप का एक और फार्मूला दे दिया. अगर तुम्हें पॉइंट्स, लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स गिविंग हो, कोई भी 2 पॉइंट्स, तो तुम क्या करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो. और इंटरेस्टिंग चीज, लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं ये. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लुक, अगर मैं ये कहूँ, ये पॉइंट जो हमारे पास क्या है, 2,5, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, 1,3. तो ये मेरा x1 होगा, ये मेरा y1. This would be my x2 and this would be my y2. And if I want to find the slope of a line, so simply y2 minus y1, that means 5 minus 3. 5 minus 3 divided by x2 minus x1, which will be 2 minus 1. And look, people, answer 5 minus 3, that means 2 upon 1, and still answer is 2. Aga, Sarmat, Smile, Dua, do you understand this thing? Hello, Yes, Sir. sir. Yes, sir. all of you. Are you comfortable this one? Now, you have a question, yaar, why we have a negative slope if a line start from, if a line move from right to left downside, and why we have a negative slope? Look, this is this is the way, that's why we have a negative slope. For example, we have 1,3, this point, and let me take this point. I can take any point of a line. It's really up to me. I just need 2 points on a line and I can find a slope. And when, whatever point you want to take, it's really up to you. But slope would not be changed. So this is a beauty of a slope. If you know this formula, you can find a slope easily. Okay, now this point would be 0,6. So I would say that this is my x1, this is my y1, this is my x2, and this is my y2. And you may see that if you want a slope, you may take like this. Okay, yaar, we have a rise. This is 1, 2, 3, 4, 4, and run is 1. That means because it's downward, the slope would be -4, and I can find this minus from here as well. Now look, I use a formula, and I will use these 2 points, y2 minus y1, which is 6 minus 3. Okay, it would be 4 now. Let me see again. Oh, it's 3. Sorry, it's 3. 1, 2, 3. It's 3. It's not 4. 3 upon 1, that means -3. Okay. 6 minus 3. As I said that y2 minus y1, x2 minus x1, 0 minus 1. M is equal to plus 3 upon -1. Because of this minus sign, the answer would be -3.
Okay, people, do you understand this thing? Hello? Hello, do you understand this thing? बच्चों, quickly. Yes, Hello. sir. जिसको आपने x2 और y2 लिखा है, जी जी, अगर मैं उसको x1 और y1 बना दूं तो कुछ भी कहीं से भी जिस जगह से चाहो आपकी मर्जी. Look, okay, this is your x1, y1, 0, 6, and this is your, for example, 1 and 3. Okay, now this is your x1, this is your y1, this is your x2, this is your y2. So we have y2 minus y1, 3 minus 6, x2 minus x1, 1 minus 0. Look, still answer is minus 3. Dua, do you understand? Hello? Dua, सर quickly. अगर मैं उसको ये बराबर वाले ग्राफ में लगाती कहीं भी लगा तो दो, सर कहीं. नेगेटिव में आंसर आता। कहाँ पर बराबर वाली ग्राफ? What do you mean by बराबर वाला ग्राफ? सर ए वाला, सर जो बेटा, पॉजिटिव ग्रेडियंट है इसका। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट है ना, यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, चाहे कहीं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, नेगेटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो. ठीक है दुआ, जल्दी जल्दी. Okay, people, I will give you a first tool of this coordinate geometry. You have to understand gradient or slope of a line can be find if you have 2 point, and formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Still you can find a gradient from a straight line, which I already told you a method. So you can find that process as well. But mostly we do not have a graph, and they will give us a point, 2 points of a straight line. Then we have to use this formula to find the gradient or a slope of a line. Hopefully you understand this thing. This is your first tool. Okay, Wajid is entering after 17 minutes, and this is not a mature thing. You have to come on time. This is really very, very important. And this is lot of work which I do for you people. I have to make, I already told you, I have to make a puzzle, and that puzzle will combine to give you a final picture. So you have to appear on time. That's I will tell you each and every step of a puzzle. So this is really, really, really important. Okay, these all things are completed. Wajid, you must come early. Wajid, why you are late? Wajid, why you are late? Wajid, quickly. Wajid, why you are late? Tell me. I don't know. Okay. Okay, people, quickly. Do you understand these example? First, read a question carefully. This is really important. First, read a question. Okay, fine. Okay, Wajid, fine. I can understand. First, read a question carefully and then see the solution. Do you understand this solution? Wajid, you missed a very important concept. I strongly recommend you have to watch this video again. When I will upload as quickly as possible. You have to see all the things. Sarmat, Aga, Dua, Ismail, do you understand this thing? Quickly. Hello, can you hear me, people? Yes, sir. यस सर। यस सर, आ गया। ओके, सरमत, बात बिल्कुल समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। आगा बिल्कुल समझ आ रही है ना? क्वेश्चन जरूर पढ़ना है सारा का सारा, लाइन के 2 पॉइंट. Hopefully you understand these things. So I am not wasting my single time because I have a lots of syllabus, and I will cover it on a past paper question. Each and every question will give you, and this is really interesting. Okay, let me start with Sarmat. Sarmat, uh, you will give me a just a picture of this graph. If the gradient of a line joining this point and this point is -2, Sarma, tell me, if a gradient is negative, line will make like this one or this one? First one or second one? Sarma, quickly.
If a gradient is negative, Sir, second one. Second one, sir. second one. That's really good because we don't know which points are, so we can't actually plot in an actual way. So I will take this is the line, for example, and they have a point like I will give first point A, name A. This can be written like this, and the second point is 2 comma 4, and they say that the gradient is -2. So anyone tell me how to find the value of k? We just have slope formula. Can we use a slope formula here? Hello? Hello? Yes, sir. Y2 minus Y1 वाला लग गया. If we say Yes, that sir. if we say that m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, Sarmat, tell me the value of m. In this question, they give me a value of m. Sarmat, jaldi se tell me the value of m. Quickly, Sarmat. Sir, value of m is equal y2 is equal to k. No, value of m. They give me a value of m. M is known as slope of a line. They give me a slope. So -2. That's really good. Okay, we may say that this is our x1, this would be our y1, it can be our y2, x2 and y2. Now I'm putting the value. Okay, y2 minus y1, that means k minus 5, k minus 5, x2 minus x1, that means -2, 2 minus k. Now cross multiplication, I already explained algebra chapters, two of the chapters. So we did these kind of question there. By cross multiplication, -2 will be multiplied with 2 minus k, and this 1 would be multiplied with k minus 5. After multiplication with -2, it would be -4 plus 2k, and it would be k minus 5. Okay, people, take this k this side, and -4 will be shift there. 2k minus k is equal to -5 plus 4, and k is equal to -1. Sarmat, Aga, Wajid, Dua, Ismail, do you understand the solution? Yes, sir. Yes, sir. So finally, look, people, I now we have a point. This point is actually -1 comma 5, and this is 2 comma -1. So -1 comma 5, -1 comma 5, and 2 comma -1. You can see the slope. If you want to find a slope, slope will be -2. Look, verified. You can verify it. -1 -5, y2 minus y1 upon 2 minus -1. 2 minus, actually a formula have a minus and -1, this one. So m is equal to -6 upon minus plus, it would be 3, and finally answer is -2. So I verify for you people that you can understand that yes, the value of k satisfy -2. Yes, students, do you understand these things? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Hopefully. Do hard work, inshallah, you will get easily better score. Quickly, within 2 minutes, you have to complete this task. Solve this practice now too. Within 2 minutes. Within 2 minutes. I'm not giving you more time. Sir, done. Okay, that's really good. This is Aga. This is Aga, na? This voice Yes, sir. is okay. Aga, I would not ask you the answer.
what these people will do, then we will share answer to each other. Go a smile quickly, Sarmat, quickly. If Wajid can understand this thing, then kindly quickly. Otherwise, he will see this video again completely. This is really necessary. And people, you should see these videos again when this is really necessary. If I upload these videos, you may see these videos again to understand the concept more better. सर हो गया ओके चलो फिर इसका मतलब सर्च डन। एक मिनट बच्चों एक सर डन। अच्छा जी चलो ठीक है आंसर बताओ आंसर क्या था 12 सर। सर 18 हाँ भाई कितना था 32 सर -15। 18 सर कोई कह रहा है 2 12 सर 12। माशाल्लाह आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं चलो मैं एक सेकंड में कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ओके स्लोप कितना दिया हुआ है -3 y2 -1 तो ये k +9 k +9 हो जाएगा और -3 मैंने k h लिया h Sir, 12. +9 और -3 -4 that means -3 is equal to h +9 -7 by cross multiplication ये हो जाएगा 21 h +9 और h should be equal to 12 जहां से ही बनाओ जैसे ही बनाओ आंसर 12 आना चाहिए कितनों के 12 आए थे Sir, मेरा सर नो सर आपका नहीं आया था नो सर सर। 12 है आंसर। तो ठीक है जिसका नहीं आया वेरीफाई कर लो मैं आगे मूव कर रहा हूँ आई एम नॉट स्टॉपिंग यार वाजिद अपना इंटरनेट को ठीक कर लो मेरे भाई बहुत जरूरी है देखो चीजें बहुत जरूरी है आई एम नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज सिंपली आई विल सॉल्व योर पास पेपर्स क्वेश्चन you will solve inshallah your past paper question okay people next concept this is really a wonderful concept and let me go to my favorite software because they will help me a lot to explain lots of things so let me go to a GeoGebra and share the GeoGebra with you people you can see a next concept easily okay the GeoGebra fine okay our next concept is actually a very interesting one I already told you the slope of a line and I give you a formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is pretty basic now our second task is we have to find a distance between 2 points for example look I plotted 2 points for you and you can easily see our first point is 2 comma 4 this is 2 and this is 4 and our second point is 8 comma 7 yes people are you with me hello people are you with me yes, hello sir. सबके आवाज कट कट के आ यस रही है सर okay fine now look I want to find the distance between these 2 points and this is really a natural question for us that we have to find a distance between these 2 points and how we find the distance between these 2 points we will use a right सर angle आवाज triangle नहीं आ रही। can you hear me hello क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों हेलो दोस्तों मेरी आवाज आ रही है क्विकली सर अभी आ रही है ओके इट्स ओके बच्चों ये रिकॉर्डिंग चल रही है आप वापस भी देख सकते हो तो होपफुली मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही होगी अगर नहीं भी आ रही हो तो रिकॉर्डिंग जरूर जरूर वापस देख लीजिएगा ओके
So let me continue again. This is really a natural thing that we have to find a distance between these 2 points, and to find a distance between these 2 points, right angle triangle will give us a very good idea. I know we have an internet issue, because I can clearly see a internet message. They are telling me that your internet is not working well, but this recording is working. Don't worry, you will see a recording again. Now, look, for these, to find these distance between these 2 points, let me make a right angle triangle. And this is really interesting. I put this point so that I can make a right angle triangle. Now, look people, if you know about hypotenuse, perpendicular base, and well known Pythagoras, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जिसको मेरी आवाज आ रही है थम्स अप कर दे, जिसको मेरी आवाज आ रही है थम्स अप कर दे, जिसको मेरी आवाज आ रही है, ओके फाइन, यू आर विद मी, ठीक है। नाउ दिस इज रियली अ नेचुरल वन that we have to find a distance between 2 points. We may use a distance formula easily. Now, this is another point which can be easily find by 8, 4. So if I want a distance, this base and perpendicular, look people, we can move to downside that this length is actually equal to this length, and this is just a number line. This is really just a number line. 8 minus 2, 8 minus 2. So it would be 8 minus 2. And look, 8 minus 2 is x coordinate of these 2 points. So 8 minus 2, so this distance is 6. This distance is 6. And now for this perpendicular, I can move here. I can move here, and you will easily see that if you want the length of this segment, which is actually equal to this one, you will minus 7 minus 4, 7 minus 4, which will be equal to, I think 7 minus 4, which will equal to 3. So perpendicular is 3 and base is 6. Okay, students, यहाँ तक बात समझ आई है? हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आई है? यस सर। यस सर। आगा सरमत जल्दी। यस सर। यस सर। ओके, दैट मीन्स अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये तरीका है ए बी के डिस्टेंस निकालने का, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है ए बी का डिस्टेंस निकालना अगर ए और बी पॉइंट है। तो हाइपोटेन्यूज यानी इसका स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ है, इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस आपके पास आ रही है यहाँ पर 6 minus 2, that 8 minus 2, that means 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है 7 minus 4, which is 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 36 प्लस 9, पर हमें ए बी का स्क्वायर नहीं, ए बी की लेंथ चाहिए, तो स्क्वायर कैसे खत्म करते हैं, रेडिकल लगाते हैं। और यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, तो हमेशा प्लस आएगा। 36 प्लस 9 जो हमारे पास हो जाएगा 40, आई थिंक 4 और 5 45, और ये मेरा ए बी का डिस्टेंस आ गया। जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दो जल्दी से, जिसको मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दो। सरमत, अगर नहीं आई तो वापस बात करूं? सरमत जल्दी। आ गई है सर। आ गई है, दैट्स सर, रियली आ गई गुड। है। अब यार, अब ये हमेशा तो ऐसे नहीं करूंगा ना, चलो ऐसे करते हैं, अब जनरल पॉइंट्स बोलते हैं। ये हमारा कोई x1 है, ये हमारा y1 है, और ये a पॉइंट है। इसका मतलब अब इसको मैं x1 कह रहा हूँ, और ये मेरा कोई x2 है और y2 पॉइंट है। इसका मतलब ये 8 नहीं, ये इस वक्त मेरा पास x2 है। और सिमिलरली ये 4 नहीं है, ये हमारा y1 है, क्योंकि y1 पे प्लॉट हुआ है ना। और सिमिलरली ये 7 नहीं है,
ये हमारा y2 है। दोस्तों यहाँ तक सबको बात समझ आई जो मैंने कन्वर्ट किया है? हेलो, क्विकली, जल्दी से। दोस्तों यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो अब डिस्टेंस फार्मूला पे Yes, sir. ड्राइव कर लेते हैं। Yes, sir. डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं भाई, वही वाली बात जो हम कर रहे थे। अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इन दो लेंथ को माइनस करना होगा, जो हमारे पास क्या होगा? x2 माइनस x1। और अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो मुझे इन दो लेंथ को माइनस करना होगा, जो क्या होगा? y2 माइनस y1। जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। और ये डिस्टेंस को अगर मैं नाम दे दूं ए बी का डिस्टेंस, तो जनाब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास रेडी है। ए बी का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दे जल्दी से। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई थम्स अप कर दे। जिसको नहीं है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और फाइनली जनाब हमने डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव कर लिया। फाइनली मुझे ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, मुझे रेडिकल लगाना होगा। तो रेडिकल लगाऊंगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी ए बी का डिस्टेंस बराबर होगा, और यहाँ रेडिकल लग जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट क्या करते हैं यार, दो स्क्वायर रेडिकल खत्म करते हैं। नो, अगर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो, दो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होता है, ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता जो नॉर्मली स्टूडेंट कैंसिल कर देते हैं भाई x प्लस वाई। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट वन। यानी अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर होता और तब रेडिकल लगता तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होता है, वरना कैंसिल नहीं होता। दोस्तों बात समझ आ गई? हेलो हेलो, जल्दी से। Yes. Yes, sir. यस Hopefully, सर। होपफुली। तो चलो भाई, दूसरा टूल दे दिया मैंने आपको। मेरा दूसरा टूल क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी अगर मैं दो पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ डिस्टेंस, जैसे मैंने रेडिकल 45 निकाला था ना, चलो जी अब इस फार्मूले से वो वैल्यूज निकालता हूँ। अब मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, इतना कोई सब कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए। यानी सिंपली मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था मुझे? पहला पॉइंट दिया हुआ है मुझे 2, ये पॉइंट क्या था? 2, 4। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ था मुझे? 8, 7। तो भाई इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कहता हूँ, इसको मैं y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। भाई मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, जो 45 आया था, मुझे ऑलरेडी पता भी है 45 आना चाहिए। तो ये कहता है भाई x2 माइनस x1, यानी 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स 7 - 4 का स्क्वायर। और हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 - 2 यानी 6, यानी 36। 7 - 4 दैट मीन्स 3, यानी कि 9 उसका स्क्वायर। और देख सकते हैं आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 45। दोस्तों बात समझ आ गई? हेलो हेलो यस पीपल, सर। यस सर। Yes, Sir. sir. होपफुली। चले इसको यहीं तक रखना होगा, 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगी। होपफुली दोस्तों आपको ये डिस्टेंस फार्मूला और स्लॉप के फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो टूल्स मैंने तुम्हें देने थे वो दे दिए। अब हम इन्हीं दो टूल्स के जरिए देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया कैसे बनाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत चीजें और आएंगी, पर यही सबसे बेसिक चीजें हैं जो हमें बार बार यूज करने होगी। जब भी मैं कहूंगा दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, you have to know radical x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square। जल्दी से मुझे फीडबैक चाहिए। वाजिद, आगा, सरमत, जल्दी से, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। दोस्तों बात बिल्कुल समझ आ रही है या स्टिल मुश्किल होती है? सर समझ Yes, आ sir. रहा समझ में है। आ रहा है. आ रहा और है, समझ आ रहा है। और अगर मुश्किल होती है तो वीडियो देख लेते हैं या वीडियो बिल्कुल नहीं देखते? सर वीडियो देखते हैं सर. देख। दैट्स रियली गुड। चलें भाई, इंशाल्लाह कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कॉन्सेप्चुअली खत्म करेंगे और फिर भागेंगे पास्ट पेपर में। जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चा ये कम से कम 30% है, ये इतने चैप्टर्स में आएगा, इतने चैप्टर्स में, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएगा, ये साइमेट्री में भी आएगा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगा, फंक्शन में भी आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ आएगा, हर जगह आएगा। खैर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह।